हेलो गाइस, मेरा नाम रविंद्र। और मैं यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी मैं बाइकॉइन के साथ कंटिन्यू करूँगा। Hi guys. So I guess all of you have joined. We have our three speakers with us, and to the viewers who are watching us today live, a very warm good evening to all of you. And so this is the first live session of the Crypto Winter Special by BuyUcoin, and I welcome you all here. And thanks for taking out the time out for coming and joining that session. So let's just talk less of the future and more of the present of the crypto market globally and in general the world market, which slipped like one slips on a banana leaf. Am I right? Hi Tashish, we just missed you in the beginning. Am I audible to you? Tashish, am I audible to you? Sir, your voice is coming. Your voice is coming. I guess he's not able to hear me. Yeah, he's not able to hear you. So, Can we do something for this? yeah, he might be rejoining, probably. Yeah. Not really sure. Cool. So, okay. So this is the first live session of the Crypto Winter Special. So let's just make this more special for our viewers, and let me just introduce our speaker panel of today's session. And yeah, just before introducing you all, I just want just a request that we'll keep the session in both the languages, Hindi and English both, so that we can cater it to and convey it to the larger audience and the larger user base of crypto, especially belonging to India. Agreed. Okay. Done? Cool. So I'll start with Mr. Jatin. Mr. Jatin Demla. Jatin Demla is an experienced marketing manager with a demonstrative history of working in the marketing and advertising industry, and also skilled in management, leadership, education, marketing, and social media, and the founder of Educator Ease. Very warm welcome, Jatin. Thank you so much, sir. Thank you so much for a warm welcome, and thank you so much for being here and inviting us for the day. Thank you so much. You're welcome. And the next in the row, Mr. Rohit Khandelwal, the founder of Coin Gabbar. Coin Gabbar is India's first marketplace assisting in the analysis, research, and investment in crypto assets. A very warm welcome to you, Rohit.
Thank you so much, Tushar, and thanks for inviting me. Thank you. Yeah. And now, if Tashish can hear me, I can hear you well. I was able to see thank you that. so much. Uh-huh. So yeah, I was just about to introduce you. So we have with us Mr. Tashish Rai Singhani, who is the CEO and co-founder of Unicus One, which is a multi-chain NFT ecosystem building transformational Web3 features. A very warm welcome to you, Tashish. Thanks, Tushar. Thanks for So having me this is here. our first live session in the Crypto Winter Special, and we have with us you all three. So let's start. Without further ado, we'll start with the main question, and I'll throw it to Jatin first. And that is, why is crypto a good investment for millennials? We have been hearing that the millennials are, too much tend towards the crypto investment and the new digital asset investment and all. So why this is happening too much? Why they are not heading towards stocks or the you know already existing before the crypto investment tools? Sir, I believe the very first thing is the over involvement of the social media is the biggest reason of it. Matlab, the reason behind it is people are investing 100 rupees in stocks, but they are like, yeah, you have to invest in stocks, yeah, you have to invest in crypto. This is the thing. And when we discuss about the crypto, okay, why the craze is becoming so craze is somewhere around due to the social media. But why it is important if we discuss, तो सर देखो सभी को हम सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है एंड बाइफर्केशन एंड योर लाइक अगर आप अच्छे से अपने स्टॉक्स को मैनेज करते हो, देखो आपका पूरा पैसा स्टॉक्स में रहेगा तो भी सही नहीं है, आपका पूरा पैसा गोल्ड में रहेगा तो भी सही नहीं है. योर इन्वेस्टमेंट and distribution of your amount is highly important, which I believe which is like extremely important for us. तो सर क्रेज तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया, एंड अगर मैं कहूँ तो एलॉन मस्क जी का बहुत बड़ा उसमें हाथ है, फॉर श्योर. इट्स अ बिग इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट, बिकॉज अभी क्रेज बनता जा रहा है. बट मोर ओवर इट्स अ फ्यूचर, मतलब व्हाई पीपल कंसीडर इज अ फ्यूचर, बिकॉज सर एट द एंड ऑफ द डे we need something other than currencies, because international trade और बहुत सारी चीजें जो कल्चर बढ़ रहा है, nowadays making everything ease, सर it is required of the time as well. अब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि यार हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार it is there, but something is the time need as well. और सर समय की नीड अगर हो किसी चीज को लेके, तो मुझे लगता है कि आपको फिर ना अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज कब कौन सी चीज कहाँ पहुंच जाती है सर किसी को पता नहीं पड़ता. नो वन कम्स टू नो एट एनी टाइम. So that's what I believe कि सर अभी अच्छा एक क्रेज चल रहा है. डेफिनेटली इट्स अ क्रिप्टो विंटर भी चल ही रहा है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बट अप टू सर्टेन लिमिट्स. आई वांट टू एड इन ऑन कि ऐसा नहीं कि यार अपना पूरा पैसा डाल दो, घर वर बेच के मत लगा देना. नहीं, पीपल्स आर देयर सर, सम पीपल यू विल कम टू नो दैट वो लोन लेके क्रिप्टो में डाल रहे हैं, तो दैट इज द वर्स्ट डिसीजन इट कुड एवर बी. बट इन्वेस्टमेंट इज जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अप टू सर्टेन लेवल्स ओनली. दैट व्हाट आई बिलीव इज. Cool. So I'll come with the same question to Tashish. Tashish, as Jatin just mentioned that he mentioned 2-3 points about that, that why millennials should invest in crypto or like that. So he pointed out the craze, the social media influence of the influencers as well. Right. And what I think he also mentioned that the ease, the time saving factor. Correct. So what's your take on that? Why do we all millennials need everything on the fingertips? That's why we are just heading towards the crypto, or we see this investment tool as a retirement thing for us of our future? No, see, investment is different for. I mean, there are a lot of things that there are a lot of parameters that involve your investment choice. So I suggest that there should be at least 5 to 10% of crypto investment in your portfolio, definitely. And that doesn't mean trading. I'm talking about investment. You should invest and at least shouldn't think about it for 3 to 5 years, and should check the fundamentals, definitely check the team, what their plan is, what their roadmap is, and is it definitely adding some value to the ecosystem. But yes, definitely one should have a certain amount of portfolio of crypto in, definitely. Cool. But not That trading. means I'm like not very much in favor of trading. Okay, so you are mainly pointing towards investing for millennials. Correct. Cool. And yeah, Rohit, with the same question, I'm coming to you.
What's your take on this? Do you have any other perspective related to this? Why millennials should invest in crypto, or have you seen any millennial around you who is actively investing or trading and have some future plans related to it? Yes, definitely. India is the country of youth, and crypto is totally attractive towards the youth as compared to the other age of investors. So India is the country of youth, and definitely the crypto investment will get increased by time to time in India. Why I think that crypto is future of the not only the India, the crypto is the future of the world, because actually at a certain point of time, due to the drawbacks involved in the cryptocurrencies, we can ignore the crypto, but we cannot ignore the underlying technologies behind the crypto. So in a case when we need to use the technologies which are bringing change in the world, we cannot ignore those type of technologies. And now nowadays the cryptocurrency is the part of those technologies. So what I see in crypto, that we can consider by considering the drawbacks related to cryptocurrencies on the part of the government, especially government of India, we can consider to have certain type of restriction toward the trading of the crypto, but we cannot ignore the impact of the technologies behind the crypto. That's why I see the very bright future in the cryptocurrencies. Nice. I agree to that point, actually. Yeah. The underlying technology should be the main focus of investing. Yep. Yeah, right. Correct. So let's commence with the session and ask another question to you. And this is for Tashish, majorly. How Web3 is revolutionizing the businesses in India? I wouldn't say it has started to revolutionize, but yes, it has a strong potential. There are multiple use cases that we see can make us get a sea change in a lot of industries, especially tokenizing. So any digital asset that has some great value is a potential to become an NFT, traded and to be used and to be posted on blockchain. So yes, there are a lot of businesses, real estate, of course, that requires a lot of compliances from the government side. And then there is ticketing. We have our partners, Block Tickets, who recently done a NFT-based premiere. Then there people are tokenizing hotel rooms, and then there are financial instruments that has a great potential to be tokenized. And we're working strongly on that front. And I think definitely in coming 2 to 3 years, you'll see Web3 and tokenization in mainstream. Cool. Nice. So, yeah, Rohit, I'll ask the same thing to you. Is there a different perspective related to Web3 in your mind? Like, I mean, what's your take related to this? As Tashish just mentioned, that it'll still take 2 or 3 years. That's because of the government things and all, if you say. What do you think about this? I think I observe Web3 as a revolution. So I hope this will become one more great investment opportunity towards the crypto investment. But actually, in the name of Web3, there are certain tokens which are actually defrauding with the investors. So Web3 is a good idea, but as Tashish said rightly, that it will take around 2 to 3 years. So basically, we need to handle the FOMO, fear of missing out. Some people are just investing their money कि ऐसा ना हो यार बाद में ये token बढ़ जाए. So what we are trying to teach to the crypto investor with our platform like coingubber.com, it definitely you should invest a particular part of your saving into crypto investment, and that too in different type of technology. You should invest your some amount of investment in like blockchain technology, certain amount in metaverse, certain amount in DeFi, certain amount in Web3. But they too, after considering the proper due diligence of the token, proper due diligence of the investor, proper due diligence of the founder, proper due diligence of the business they are trying to carry. So definitely Web3 is a revolutionary idea, but बहुत सारे frauds हो सकते हैं Web3 token के नाम पर.
So after considering the fundamental aspect of the token, you should definitely invest a chunk of amount, a chunk in your Web3 tokens. But एक और चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी सारी अच्छी हैं और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन शुड बी देयर. आई रियली एग्री कि Web3 एक बहुत अच्छा आइडिया है, बट डेफिनेटली मेटावर्स भी एक बहुत अच्छा आइडिया है. ब्लॉकचेन एक बहुत रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में. डीफाई बहुत कुछ चेंज करके रख देगा फाइनेंस के सिस्टम को आने वाले टाइम में. मुकेश अंबानी रिसेंटली स्टेट कि ये अगले 10 साल में फाइनेंस को चेंज करके रख देगा डीफाई. So definitely Web3 is one of the good thing, but this is not the only thing which exists in crypto. Web3 रिवॉल्यूशनरी है, बट Web3 में हम सबसे पहले देख लें कि जिन टोकन्स में आप पैसा लगाना चाहते हो वो एक्चुअली Web3 का ही काम कर रहे हैं ना. तो फंडामेंटल्स चेक करने के बाद इन्वेस्टमेंट किया जाए और एक छोटा अमाउंट, बट यस Web3 is going to be a great investment opportunity. And I also think strongly, I also think that all these things that you just named that comes under the category of virtual digital assets now, they interconnect somewhere in between. They interconnect, and the use cases, then only we see the use cases expanding and helping the businesses in the future. As Tashish just mentioned, that it will take 2 to 3 years. Exactly. That's the point, I guess, if I'm not wrong. Cool. But Rohit, how CAs, chartered accountants, and these tax people are, helping people to understand these things? So actually, the taxes the and all. idea behind CoinGabbar is to help the people, is to educate, is to spread the awareness among the crypto investor. Because crypto में investment opportunities बहुत है, but पैसा खोने की opportunities भी बहुत ज़्यादा हैं. इसलिए we came up with an idea कि there are number of investors in the market, there are number of opportunities exist into the market, but investors are not properly and adequately aware about the scenario of the crypto. And there's a reason we started our venture in the name of CoinGabbar. The aim is to educate the investor, to aware the investor. In the same line, taxation also comes. हम यही चाहते हैं कि investor taxation aspect को consider करें. Soon, before the insertion of section 115 BBH, which deal with the taxation of cryptocurrency, it is virtual digital assets in India. उसके पहले भी हम लोगों से यही कहा करते थे that crypto investment is not an illegal transaction, and crypto investment is not free from the taxation aspect. As far as Income Tax Act is concerned, even before insertion of the section 115 BBH, crypto was taxable in India, but not with the flat rate of 30%. Right? तो even अगर आपके पास, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो लोग 31 जुलाई 2022 मींस 1 और 2 दिन जो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए अभी रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम है, अगर डेट एक्सटेंड होती है या आप जब भी रिटर्न फाइल करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022, स्टिल अगर आपने ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर कुछ पैसा अर्न किया है बाय ट्रांसफरिंग द क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, that income is also taxable. That can be taxable under the business profession head, that can be taxable under capital gain head, that can be taxable under the other sources, is because the act is silent regarding the crypto taxation in financial year 21-22. So even it is not there, even the section is not there, but the taxation is there. So आपकी basic income में वो income add होनी है और आपकी रेगुलर टैक्सेशन की जो रेट्स एप्लीकेबल थी आप पर, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा. फॉर एग्जांपल, हमारी अगर टोटल इनकम है 4,50,000 एंड यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 फ्रॉम द क्रिप्टो ट्रांजेक्शन इन FY 21-22, देन डेफिनेटली आपकी टोटल इनकम हो रही है 4,90,000. एंड इन इंडिया 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा. इट मींस दिस क्रिप्टो इनकम इज टोटली आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द टैक्स एज ऑफ नाउ फॉर द FY 21-22. Now, if I talk about after 1st April 22, अगर आपकी इनकम है 0 और अगर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से आपको ट्रांसफर करने पर इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए, तो यू नीड टू पे 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स ऑन दिस 1 लाख रुपीज ऑफ इनकम. तो 1 लाख पर फ्लैट 30% से आपको टैक्स लगेगा. So there are certain myths exist with related to which relates to this taxation system in India. First myth, whether we will get the benefit of ₹2,50,000, the answer is no. अगर आप 1 रुपया भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हैं 30% आपको टैक्स देना होगा. सेकंड थिंग,
कि क्या ट्रांसफर पर टैक्सेशन है या कन्वर्जन पर भी टैक्सेशन है। आपके इस बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आपने बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट किया तो देयर आर सर्टेन मिथ्स दैट दिस इज नॉट ट्रांसफर एंड दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, द ट्रांसफर include exchange also under income tax act section 2 subsection 47 which define the term transfer that include exchange. So whenever you convert your BTC into ETH, the transaction is treated as transfer and that will get taxed. Now point number 3, whether the loss from one crypto asset can be set off from the profit of other crypto asset. So I hope the time is not there to elaborate the things, but as far as our expert opinion, you can set off the loss from one cryptocurrency from the profit of other cryptocurrency. That is according to the interpretation of the section 115 BBH. I am this field of taxation from last 10 plus years. I am teaching to the students of CA and CS the direct tax part from last 10 plus years. So according to my interpretation, you can set off the loss from one crypto to the profit from other crypto. So for example, आपको इस साल FY 22-23 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है BTC से और 40,000 रुपीज का लॉस हो जाता है ETH से, इथेरियम से। आप केवल 60,000 पर टैक्स देना, आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसके लिए डेफिनेटली आप कॉइन गब्बर के यूट्यूब चैनल पर भी अगर देखेंगे, सॉरी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तुषार, सो मैं बहुत ब्रीफ कर रहा हूं कि यस इट इज अलाउड। माय डिटेल्ड डिस्कशन इज देयर, हमारा ब्लॉग भी है इस मैटर पर, coingabbar.com पर अगर आप आएंगे तो ऐसे आपको ढेरों आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल पर। हम इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को हम अवेयर करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स किसी भी तरीके के धोखे में ना रहे। एंड नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि क्या हर एक इनकम पर 30% टैक्स है क्रिप्टो में, पर आंसर इज नो। डिटेल डिस्कशन में थोड़ी देर बात करता हूं। डेफिनेटली इट वाज अ रियली नाइस क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। मेरे ख्याल से जितने भी कंफ्यूजन होगी व्यूअर्स को, वो इन पॉइंट्स से सारी दूर हो जाएगी। बाकी उनको कहाँ जाना है, रीडायरेक्ट होना है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो आप बता ही चुके हैं। तो एक तशिश से ही मेरा दोबारा एक क्वेश्चन है Web3 से रिलेटेड। Web3 जैसा कि आपने अभी तशिश मेंशन किया था कि इट विल स्टिल टेक 2 or 3 years to get implemented in India properly in all the businesses, if you say so. Okay, so Web3 as service, WAS. So basically my question is how WAS works and how it can help in developing a Web3 ecosystem in India. Good. That's actually an appropriate question for me. So आप ऐसे समझिए कि आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुना है, देखा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। So वहाँ पे क्या होता है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं अपने लिए पर्सनली, वो चॉइस है आपकी, आप डेवलप करें या एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस यूज करें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। आप कुछ वहाँ पे आपको लोग हायर करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी, सब कुछ। वही चीज रेप्लिकेट Web3 में हो गई है। आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर बट दिस टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय मी, Web3 एज अ सर्विस। मैंने पहले कभी सुना नहीं। और Web3 का जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इजीली हेल्प कर सकता है, बिकॉज सी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अब काफी टाइम से चल रहा है, इट्स क्वाइट मैच्योर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट, यू कैन फाइंड इंजीनियर्स इजीली। बट Web3 में ऐसा नहीं है। जितनी डिमांड है उससे 1/3 सप्लाई है, एंड देयर वेरी एक्सपेंसिव, एंड सो देयर लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर। सो वी फाउंड आउट दैट दिस इज अ स्वीट एरिया इस पे हम काम कर सकते हैं। सो वी हैव डेवलप्ड सम मॉड्यूल्स which can be easily implemented into some Web2 solutions, और बेबी कोई नया लॉन्च कर रहा है अपना प्लेटफॉर्म, उसमें इंटीग्रेट करके गो टू मार्केट बहुत जल्दी हो जाता है, there's less cost involved, secure है, scalable है, and there is I mean like it's win-win for both the parties. capex बहुत कम है, जो भी है वो opex ही है। Okay, so basically see because that's why we are doing this live session, so that our audience can understand it properly कि ये Web3 ये terms थोड़े से confusion create कर देते हैं जब किसी लेमन के पास ये सब words जाते हैं,
दे हियर ऑल दीज वर्ड्स कि हाँ ठीक है, क्रिप्टो तक ठीक था, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जो भी है, बट जैसे ही ये सारे वर्ड्स आते हैं, ओके वी आर इन द इंडस्ट्री, वी ऑल्सो समटाइम्स हार्डली अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, बट इफ आई से यू कि एक लेमन को समझाना है कि वेब 3 क्या है इस प्लेटफॉर्म से, हाउ कैन यू जस्ट इलेबोरेट इट फ्यू लाइंस? सी वेब 3 समझने के लिए पहले वेब 1 और वेब 2 समझना होगा, और वो काफी लंबा चलेगा, बट वेब 3 के लिए प्राइमरली आप डिसेंट्रलाइजेशन समझ सकते हैं कि अच्छा। कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो एक सिस्टम को चला रहा है। तो वेब 3 इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। वहाँ पे आप अपने एसेट के आप ही ओनर हैं। कोई अभी आप बैंक में भी पैसा रखते हैं तो वो आपको एक नंबर ही दिखता है आपके अकाउंट बैलेंस में। आप मुझे यूपीआई करेंगे 25,000 का तो आपके वहाँ कम हो जाएगा, मेरे यहाँ बढ़ जाएगा, बट वो कैश बैंक में ही पड़ा हुआ है, तो somebody else is holding it, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओनरशिप आपके हाथ में ही रहती है हमेशा। So that's the fundamental difference. Cool. और Okay, I understood. प्लीज आई गेस ऑडियंस भी काफी हद तक समझ चुकी होगी, बट डेफिनेटली जैसे कि तशिश ने मेंशन किया, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि चाहे आप ट्रेड की बात करें, चाहे किसी भी टर्म की बात करें जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑन योर एंड। बिना उसके neither you have to invest, neither you have to just tell it to, or transfer the half knowledge to anybody else. So आप पहले पढ़ें, रिसर्च करें, then you can just do all things like it. Rohit, before Rohit, I have one question for Jatin. Jatin, बियर मार्केट में क्या करना चाहिए? बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन अभी चल रहा है, जो बियर का मार्केट में क्या करें? सब कंफ्यूज हैं, मार्केट डाउन हो गई है एकदम से, एंड फोमो इतना ज्यादा है कि एवरीबडी इज जस्ट सीइंग द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट के बियर्स आ चुके हैं और ये अभी कभी नहीं जाएंगे। दिस इज द साइकोलॉजी आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। Actually, you are not audible, I guess. Yes, now is it audible? Yeah, correct. तो फॉर मी, मतलब मुझे तो जब मार्केट गिरता है ना सर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फॉर मी इट इज लाइक, क्योंकि मतलब आई सीन एज एन अपॉर्चुनिटी। देखो एक बात समझो, वो बचपन से सर पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन लोग कि फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब यही चीज स्टॉक मार्केट में आती है तो फिर अपन लोड क्यों लेते हैं? तो अगर फेलियर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस है तो बियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू बुल है ना सर, ऑब्वियसली बात है। बिकॉज बुल कंसिस्टेंट बुल इज नॉट पॉसिबल, एंड कंसिस्टेंट बुल किसी के लिए अच्छा भी नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। सो अगर वो बियर में आता है, जैसे मैं आज ही सेंसेक्स भी देख रहा था सर, वो साल में फॉर 1 ईयर वो 3 या 4 बार गिर चुका है। अब मुझे एक बार बताओ, एंड मुझे ऐसा लगता है सर, ये जो थोड़ा सा मतलब लोगों ने एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा ओवर समझ लिया इस चीज को। मुझे बताओ ना, शेयर नहीं गिरा, क्या नहीं गिरता है, गोल्ड नहीं गिरता है, प्रॉपर्टीज के रेट नहीं गिरते, सब कुछ ऊपर नीचे होता है सर। दिस इज द प्रोसेस। और जब मार्केट नीचे आए तो एकदम शांति में रखने का पैसा, मतलब ऐसा रूल मैंने एक जगह पढ़ा भी था, जो मैं फॉलो भी करता हूँ। 80% इन्वेस्ट, 20% होल्ड। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, सिर्फ इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ 80% करना, 20% अपनी जेब में रखना, सो दैट जैसे ही मार्केट गिरे आप उसको खरीद पाओ। बिकॉज सर सभी लो पे खरीदना चाहते हैं, हाई पे बेचना चाहते हैं। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, और वही प्रॉफिटेबल भी है। तो कंक्लूडिवली अगर बात की जाए, जो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है सर, बियर मार्केट इज द बेस्ट मार्केट। अगर इंसान प्रेशर में नहीं आया तो वो कमाता है, प्रेशर में आया तो गवाता है। गवाता सिर्फ वही है जो प्रेशर में आता है। और प्रेशर का एक ही रूल है कि आप आप इससे अपना घर चला रहे हो क्या? अगर आप इससे अपना घर चला रहे हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अब आपको समझना पड़ेगा सर, माइंड रिलैक्स रखो, एकदम शांत रखो। मार्केट गिरा है, अपनी होल्डिंग्स बढ़ाओ और थोड़े क्रिप्टोज खरीदो। जैसे आपने थोड़े से भी और क्रिप्टो खरीद लिए सर, आपका एवरेज ऑन तो हो ही गया, दैट्स ऑब्वियस। एंड जब बेचोगे तो सर आप उस दिन आपको खुशी होगी बहुत ज्यादा। Definitely. And what one can do? What are the things to do in bear market? सर देखो सर, बियर मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा है तो हर कोई उठेगा। देखो एक सर से हमें चीज समझनी पड़ेगी सर, विच क्रिप्टो यू हैव टू सिलेक्ट। मतलब ऑब्वियसली बात है, व्हेन बियर मार्केट इज दैट डेफिनेटली बाय द एज मच एज यू कैन, मतलब इन अ गुड क्वांटिटी, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि सर बार बार हर किसी को बियर मार्केट देखने का मौका नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली जैसे बियर मिले आप परचेसिंग तो करोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी में परचेसिंग कर लो। उसके बाद भी एनालिसिस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दो लोगों ने कहा भी कि यार देखो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज इट इज लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ओनली सर. स्टॉक्स में अपन रिसर्च करते हैं ना, हाउ इज द फाउंडर एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, व्हाट इज द एम ऑफ द क्रिप्टो, सब कुछ देखना पड़ेगा. एंड जो क्रिप्टो अच्छा डाउन हुआ है और अच्छा वैल्यू रखता है सर, आंख बंद करके डाल दो पैसा, बाद में मस्त मजे जिंदगी के. Okay, this was 1 or 2 points if I count. If I Yes. if I say you to list all the 5 points if you have in your bucket to do in a bear market, what would you say? सर डेफिनेटली देखो, बिफोर बियर मार्केट आई वुड रेदर से, बिफोर बियर मार्केट आल्सो आई हैव अ लिस्ट कि जब मार्केट आएगा तो मैं बाय करूंगा. तो बियर मार्केट में उतरने से पहले आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन रखनी पड़ती है. जो आपको लगता है कि स्टॉक्स अच्छे, जो आपके क्रिप्टोस अच्छे हैं, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास फॉर श्योर. दिस इज माय पॉइंट नंबर 1 व्हिच आई फॉलो. पॉइंट नंबर 2, हैव एटलीस्ट 20% ऑफ, एज आई ऑलरेडी सेड, 20% आपका फंड आपके पास लिक्विडिटी में होना चाहिए. देन ओनली यू कैन यूज द बियर मार्केट. पॉइंट नंबर 3, जब मार्केट गिरा है तब प्रेशराइज नहीं होना. अगर आप प्रेशराइज हुए तो आप निपट चुके हो, दैट इज फॉर श्योर. आप गवा चुके हो, अपना पैसा तो नहीं कमा पाओगे फॉर श्योर. पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो सब व्हेन द बियर मार्केट अराइव्स नाउ कभी भी इंस्टेंट सेल मत करो. ये मुझे लगता है कि इंसान लॉस में सेल कर रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार अब बस बेच दो यार, सब खत्म होने वाला है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी. ये एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी. तो कभी बियर मार्केट में सेल तो मत करो यार. At least if you can hold that is respect to your holding power, and that is respect to your coins and cryptos as well. Point number 5, if I want to add in on, I can tell you one thing very clearly psychologically. देखो, जब मार्केट गिरता है बहुत लोग डूबते हैं फॉर श्योर. 5 या 7 या आई डोंट थिंक सो 5-7% लोग भी कमाते होंगे, 2 या 3% लोग कमाते होंगे. उसका सिर्फ एक रीजन है सर, पेशेंस. मार्केट गिरा है ना, अगले दिन नहीं उठेगा. उसको 6 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लगते हैं, 1 साल लग सकता है, शायद 2 साल भी लग जाए. दैट इज नॉट नोन बाय यू, मी और एनीवन. सो पेशेंस एक की है सर बियर मार्केट में सक्सेसफुल होने का. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. आई बिलीव सो. Cool. So that, So I guess our viewers are, jotting down all the points that Jatin just mentioned that to do in the bear market. So I guess you were already prepared with the pen and pencil in hand. So just keep noting all the points because the session is going to be very knowledgeable for you. One more question, Jatin. yes. Related to Web3, I want to ask the same question that I asked to Tashish, related to how you see Web3, recreating the future of businesses in India. सर द वे ही सेड कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन इज नीडेड, इट्स इंपॉर्टेंट, एंड मुझे लगता है कि वो समय की रिक्वायरमेंट है सर. तो मतलब जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़े, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो सभी को सर बहुत फायदा देके जाती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट सभी को होता ही है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है इन बिजनेस एज वेल इट इज इंपॉर्टेंट. मतलब द वे ही ऑल्सो मेंशन्ड कि in a websites and everything, because educator is in IT company, so we are into all this thing. So technically if we discuss about it, so it's a decentralization क्यों जरूरी है? Because किसी भी कुछ लोगों का कंट्रोल उस चीज को नेगेटिव बनाता ही है सर. मतलब आज की तारीख में अपन किसी को गलत या सही नहीं बोले, पर बैंकिंग जैसे पूरा कंट्रोल कुछ बैंक्स का होता है ना सर. तो डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर द फ्यूचर, व्हाट आई बिलीव इन. सो फ्यूचर है सर, मतलब दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर ऐसा. सो आई टेक इट इज अ वेरी पॉजिटिव. Yes. Cool. So let me get back to Rohit and ask him that bear market chal raha hai already, we know that. Then how can someone book a profit post considering the taxes and TDS, all the stuff? Rohit, can you hear me? Am I visible? Perfect. Okay. Yes. So definitely, जतिन ने भी अभी कहा कि बियर मार्केट से आप प्रॉफिट कमाने की उम्मीद तो मत रखो. ये एक्सपेक्टेशन रखो that in near future, that maybe 3 months, 6 months or 1 year, you will be able to realize the gain what you are expecting out of your crypto investment. सो डेफिनेटली सबसे पहले तो वेट करें. और एक और बहुत बड़ा मैटर ये है अभी इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर कि टैक्सेशन के बाद सब कुछ खत्म हो गया है. तो यार देखो, टैक्स 30% ही लग रहा है और आपकी बाइंग पर नहीं लग रहा है, आपके प्रॉफिट पर लग रहा है. तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने 1 लाख रुपए बीटीसी में लगाए थे, जब वो 10 लाख हो जाएंगे तो 9 लाख रुपए पर 30% टैक्स लगेगा. आप जो कमाओगे ना उस पर लगेगा. इट्स नॉट जीएसटी.
कि आप कुछ भी खरीद रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है। इट्स नॉट जीएसटी, इट्स इनकम टैक्स। आप कमाओगे तो लगेगा, और कमाओगे कब? जब आप बियर मार्केट में अपनी एवरेजिंग कर लोगे और बुल मार्केट तक आप वेट करोगे। प्रॉब्लम इनकम टैक्स का नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है थ्रू टीडीएस प्रोविजंस कि यार यहाँ तो खरीदते वक्त भी मुझे कुछ कंप्लायंसेस करने, डेफिनेटली यू नीड टू मेक इट। So, with your prestigious platform, what I can tell to the investors, to the viewers, that TDS is not the responsibility of the investors. Yes. From the plain language of the section, what we can conclude that this is my responsibility to deduct the tax whenever I'm buying any type of crypto. Yes, from the plain language, you can conclude it. But recently, the CBDT came with a circular or notification with respect to that section, where they clearly mention that if you are buying certain type of crypto from any other investor, then on your behalf the TDS will be happened through the crypto exchange, and it's not your responsibility to withhold the tax. So the first of all, exchange is bound to cut the TDS on behalf of the you people are bound seller. to deduct the tax on behalf of the investor. So exchanges Yeah, are bound basically. to yes. तो इन्वेस्टर्स को मैं बताना चाहता हूं कि ये तुषार जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो 1 लाख रुपए का बीटीसी अगर आप किसी इन्वेस्टर से खरीद रहे हैं, तो ये बायू कॉइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 1000 रुपीज कट करके 99,000 दे सेलर को, और आपकी पॉकेट से तो 1 लाख रुपए ये डिडक्ट करेंगे, लेकिन ये सेलर को देंगे 99,000, तो 1000 रुपीज देंगे गवर्नमेंट को। तो पहली चीज कि पेशेंस रखें, और रिटर्न होने पर ही टैक्स लगेगा, विदहोल्डिंग पर टैक्स नहीं है। व्हाट आई कैन सजेस्ट टू द इन्वेस्टर कि आप होल्ड करोगे तो टैक्स नहीं है। कुछ मेरे पास जो बहुत रेगुलरली कॉल्स आते हैं, वो ये कॉल्स आते हैं कि रोहित 31 मार्च 2022 को मेरे पास अराउंड 15 लाख रुपीस की क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग थी, क्या मुझे कोई टैक्स देना है? तो ये मिथ है ना, होल्डिंग पर टैक्स नहीं है, आपकी इनकम पर टैक्स है। तो बियर मार्केट है, वेट करो, अभी हमने पैसा वैसा भी नहीं कमाया है, तो पहली टिप तो ये कि वेट करो फॉर द गुड टाइम, अगर आपकी बकेट में बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाले क्रिप्टो असेट्स हैं, वीडीए है। नेक्स्ट थिंग, टीडीएस से आपको डरने की जरूरत नहीं है बीइंग अ बायर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिहाफ पर क्रिप्टो एक्सचेंज कर रहा है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हर किसी ट्रांजेक्शन पर 30% टैक्स भी नहीं है, राइट? एक्चुअली इसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, सॉरी मैं कंटेक्स्ट के बाहर जा रहा हूं, बट एक और चीज बता दूं कि एक कुछ दिन पहले, लाइक जस्ट आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ टीडीएस, जो कि 1 जुलाई से हुआ, हमने 5th-6th जुलाई को न्यूज देखी थी कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर अप्रॉक्स 90 to 95% ट्रेडिंग कम हो गई है, मींस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ट्रेडिंग हो गई है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो लोगों ने गलत सोचा क्रिप्टो मार्केट अब खत्म होने वाला है, 30% टैक्स लगा दिया, टीडीएस कर दिया, इस वजह से देखो इन्वेस्टर अब आ ही नहीं रहे। गाइस, इन्वेस्टर नहीं, ये बड़े प्लेयर्स बाहर गए। वो लोग जो रेगुलर ट्रेड करते थे वो बाहर हुए हैं, वो लोग जो बॉट कर रहे थे वो बाहर हुए हैं। तो शायद देखो एक एग्जांपल समझते हैं। 500 यूएसडीटी से मैंने बॉट स्टार्ट किया और मैं दिन भर में 10 बार इसे रोटेट कर लेता था, राइट? तो मैंने 500 यूएसडीटी मुझे मिनिमम चाहिए, मैं 10 बार इसे रोटेट कर लेता हूं बहुत रेगुलरली, खरीदता हूं बेचता हूं, और बेचते वक्त मुझे 1% टीडीएस बियर करना है, मींस 1% टीडीएस कट के मुझे पैसा मिलेगा। अब आपने अगर बॉट के थ्रू 10 बार ट्रांजेक्शन कर लिया तो 500 यूएसडीटी मल्टीप्लाई बाय 10, 5 द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसके लिए फंडामेंटल्स देखो, और उसी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर रहा है coingabbar.com। हम इसीलिए आए, हम इंडस्ट्री में इसीलिए आए, दैट्स व्हाई द इंडस्ट्री इज रिस्पोंडिंग अस लाइक एनीथिंग।
क्योंकि हम Yeah, यही correct. बताते हैं। I agree with your point, Rohit. As just Tashish also mentioned that you have to invest, not just trade. And I also think that I am also in the favor of investing for a long-term kind of thing, not just trade on a daily basis and and getting into the FOMO or the FUDs of the market and the people who are just getting just disappear from the market one day or day by day. And I have a quick question to Tashish regarding one thing, regarding Web3 only, Web3 gaming, which has I just wanted to ask, does Web3 gaming has more use cases than any other industry? सी Web3 गेमिंग, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। हम गेम शुरू से खेलते आए हैं, वहां पे हमने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे अवतार होते थे पहले भी, अब कुछ और नाम दिए गए उनको, बहुत सारे कलेक्ट करते थे, बट वो हम कभी ओन नहीं करते थे उनको। आज ब्लॉकचेन, वेब3, क्रिप्टो के आने की वजह से, एनएफटीज की वजह से उन सबको हम ओन कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में, वो हमारी ओनरशिप में होता है। जब ओन कर सकते हैं तो हम उनको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत हैवी वैल्यू है। एक गेम आप खेल रहे हैं जिसमें आपके पास कोई पावर है जो आपको उसको खेल करके अचीव करना है, बट एक मैं आता हूँ आज, मुझे वो खरीद सकता हूँ मैं उसको आपसे, आपको उससे फायदा होगा और मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मुझे ये पावर मिल गई है। तो इट्स अ बिग मार्केट और डेफिनेटली ये बूस्ट दिया है इसने और आगे भी देगा। और क्या फिर ये Web3 गेमिंग, जैसे कि आपने कहा इट्स अ बिग मार्केट, तो क्या इसका भी हम जो मेजर चंक है एक्सपैंड होता होगा दो तीन साल बाद ही देखेंगे जैसे बिजनेस में, या फिर ये ऑलरेडी अभी चल रहा है, एकदम चल रहा है ये। सी यहाँ पे बहुत कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं है, और जो गेमर्स हैं वो टेक savvy होते हैं पहले से, उनको टेक्नोलॉजी भी समझ में आ जाती है। सो ये चल रहा है, दिस इकोनॉमी इज ऑलरेडी फ्लरिशिंग। So are you a gamer yourself? No, I am not. No. But I understand the ecosystem very well. मैं खेलता नहीं। Cool. Yeah. Okay. And I have one more question from this. What is the future of crypto? Okay, we have some questions from the viewers itself now. Let me just read out to you. Okay, this is for Rohit, I guess. Rohit, can you just answer this question of Naren Kumar? He wanted to know if exchange transfer our crypto to cold wallet, will there be a 31% tax? If you permit, can I share my screen? See, we have a list of questions, Rohit. So if you can just make it quite brief to Naren. Better that investor can take the screenshot of this particular slide, where I have mentioned number of transactions. So second column ka point number 2, transfer of crypto from exchange to wallet is not a taxable event, and that's why it is exempt transfer. But this is actually not a transfer. So whenever you transfer your crypto from your exchange to your wallet, there is no taxability. Okay. And yeah, Jatin, I guess this is for you by Rahul Mukherjee. I guess Jatin is not with us now. No problem. I guess you can answer this question, Rohit, again. What is the future of crypto in India since it's on the verge of getting banned? Rahul Mukherjee wants to know the answer. There is nothing like ban. Government is taking our patience. So I don't think in the era when our Prime Minister is advocating regarding the blockchain technology, है ना, हमारी IIT में जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वो ब्लॉकचेन बेस्ड डिग्री अनाउंस करके आते हैं। जब हमारे लीडर वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो हमेशा वो एडवोकेट्स करते हुए दिखे हैं कि वी नीड टू कंसीडर द न्यू टेक्नोलॉजी। एंड एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, एज फार एज द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न, मुझे कभी नहीं लगा कि गवर्नमेंट इसे बैन करेगी। गवर्नमेंट अभी टेंस्ड है इस चीज को लेकर कि हम इसके मिसयूज कैसे रोकें। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा मैटर है, टेरर फंडिंग एक बहुत बड़ा मैटर है, ड्रग फाइनेंसिंग ड्रग्स की फंडिंग एक बहुत बड़ा मैटर है। गवर्नमेंट अभी रास्ते ढूंढ रही है और हम गवर्नमेंट को कई बार कह चुके हैं कि हमें यूज का, आप हमारी हेल्प लीजिए, हम आपके साथ रेडी हैं काम करने के लिए, और हम आपको तरीके बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इन मिसयूज को रोकें। जैसे तुषार, अगर हम सिंगापुर या दुबई की बात करें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट मूव किया है।
उन्होंने क्या कहा है, दे ओपन देयर डूर, है ना, राइट, उन्होंने कह दिया सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, आओ हमारे एक्सचेंज चलाओ, सब करो, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे यहाँ से सिक्योरिटी टोकन इशू नहीं कर पाओगे। तो राइट, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट। तो हम भी तो ऐसे मूव कर सकते हैं। हम अभी बैन करने की डायरेक्शन में सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नमेंट को इनपुट्स ही ऐसे दे रही है। निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कभी भी पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये नहीं कहा है कि हम क्रिप्टो को बैन करेंगे। उन्होंने कहा कि आरबीआई कह रही है कि बैन कर दो, लेकिन उसके बाद का कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो हमारी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें पूरे ग्लोबल कंसेंसस चाहिए, और उसका मतलब ये ग्लोबल कंसेंसस हमें नहीं मिलेगी। नोबडी विल प्रोवाइड अस द कंसेंसस, इट मींस इज नॉट गोइंग टू बी बैंड। तो मेरा बहुत क्लियर सेंस है। हमने 1 साल पहले भी कहा था क्रिप्टो पर अभी बिल नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी ऐसा कोई रेडीमेड बिल अवेलेबल नहीं है। हाँ, हमें लाना चाहिए और वर्ल्ड का लीडर बनना चाहिए। किस तरह से वर्ल्ड को हम बताएं कि आप मिस यूज करोगे। कोई बिल नहीं है, इस मानसून सेशन में भी क्रिप्टो को लेकर कोई बिल नहीं आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। और बैन को लेकर जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई बैन होने जा रहा है। टैक्स लगा रहे हैं, हमारा पेशेंस चेक कर रहे हैं। आप प्रॉफिट कमा लो, मैं तो चाहता हूं यार हम 1 करोड़ रुपए कमाए, 30 लाख रुपए का टैक्स दे गवर्नमेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं चाहता हूं मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ माय इकोनॉमी। तो हम कमाना चाहते हैं, 30% टैक्स देने के लिए हम रेडी हैं, बट मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट बैन करेगी फॉर श्योर। So I guess our viewers will definitely get inspired by by these statements that someday or the other they will definitely pay 30 lakhs of tax to government. And yeah, Tashish, again I'll come to you. There's a question from Priya, I guess. Question by it's by Ashu. That does Web 3.0 gaming has no, it's already done, I guess. It's by there's a question by Priya only. Yeah, how tax is affecting a Web 3.0 businesses, or how it will affect these businesses based on Web 3.0? See. So any Web3 business doesn't necessarily have to be token driven. बहुत जरूरी नहीं है आपको कि टोकन होना चाहिए। It's advisable, और उसका कंप्लीट यूज करने के लिए उसमें एक टोकन डेफिनेटली होना चाहिए उस इकोसिस्टम में। अगर टोकन है तो व्हाट रोहित मेंशन्ड वैसे ही चलेगा, सारे टैक्सेशन इंडिया में वैसे ही फॉलो होंगे। बट अगर टोकन नहीं है, वी आर जस्ट मैनेजिंग फिएट करेंसी, तो फिर टैक्सेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है उसके अंदर। Done. I guess Priya, your question is answered very nicely by Tashish. So yeah, let's head towards another question. And we have Mr. Again, we'll go to Rohit. Is there any rebate in crypto tax? डोंट इवन थिंक। आप प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हमें टैक्स देना है, ये सब बातें छोड़ दें। दुआ करता हूं। Sorry to interrupt, this question is from Money T Point. Yes, now you can continue. मैं दुआ करता हूं आप 1 करोड़ रुपए कमाएं और बिना किसी रिबेट के 30% टैक्स दें। देयर इज नो रिबेट। मैंने आपको एक बहुत अच्छा फंडा जरूर बता दिया है कि लॉस आप सेट ऑफ करें, बिंदास सेट ऑफ करें। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप बिल्कुल मेरा वीडियो देख लें, आपको पता चलेगा कॉइन गब्बर पर कि क्यों मैं कह रहा हूं लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ। वही रिबेट है मेरी ओर से, रिबेट कहीं रिबेट नहीं है अदरवाइज। Cool. I guess Money T Point, your question is also answered by Rohit Khandelwal. And let me just check if you have any other questions. Okay. Yes, this is for you, Rohit, only. And it is, yeah. So Rahul Das is asking that suppose you are investing, it's 1 lakh, correct? Suppose you are investing, suppose you are investing 1 lakh rupees, portfolio value becomes 1,20,000, but you have withdrawn 40,000. How much are you going to calculate for 30% tax? Or on what amount you will have to pay 30% tax, just to be more clear? सर क्रिप्टो का हटाते हैं, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मैंने 20 लाख रुपए का एक मकान खरीदा, वो बढ़कर 1 करोड़ रुपए का हो गया। क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज नो।
ये जो गेन हुआ है अपनी सोच में हुआ है, अभी तक आपने इसको रियलाइज नहीं किया है। टैक्स तब लगेगा जब आप इसे रियलाइज कर लेंगे। तो आंसर इज, आई होप आई हैव गिवन द आंसर, कि जब आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए भी हो जाएगा तो भी यू नीड नॉट टू बियर द टैक्स। टैक्स आपको तब बियर करना है जिस दिन आप उस क्रिप्टो को सेल करेंगे। ट्रांसफर पर टैक्स है, होल्ड करके अर्न करने पर टैक्स नहीं है। इसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज में रियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो रियलाइजेशन पर प्रॉफिट है, केवल वैल्यू बढ़ने पर टैक्सेबल नहीं होगा कुछ। Cool. I guess Rahul, your answer, your question is also answered, and I guess we don't have any other question from the viewers itself, and seems like कुछ clarity मिल गई है. एक knowledgeable session that we started is like going to end with a very good note, I guess. And yeah, any last advice from you, Tashish? Any last word to the audience by your side, by your end? Yeah, there's one thing which I tell everybody, और especially इंडिया में वो इम्पोर्टेंट है सबको जानना। जैसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड यूजर्स होते थे, ब्लॉकचेन में, वेब3 में, क्रिप्टो करेंसी में कम्युनिटी होती है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आपको पता चलता रहेगा डायरेक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के इंटरेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे। कम्युनिटी इज एनीबडी हु इज होल्डिंग दैट टोकन। हर वॉलेट होल्डर को कम्युनिटी का पार्ट माना जाता है। सो येस, डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आप अंडरस्टैंड करें प्रोजेक्ट कैसा है, इवैल्यूएट करें टोकन को, तभी इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करें, ट्रेड नहीं करें, ट्रेड से दूर रहें। दैट्स माय एडवाइस। So all the traders out there, you have an alarm. But thanks for joining, Tashish. And Rohit, any last advice or suggestion or anything, and your take to the audience? Same, don't invest without any due diligence with respect to your token or any type of VDA. इन्वेस्ट मत करो बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए, आप इन्वेस्ट ना करें। देयर आर नंबर ऑफ फंडामेंटल्स एग्जिस्ट इन दिस सिनारियो। फंडामेंटल्स एनालाइज करें, अपनी सेविंग का एक पर्टिकुलर पार्ट ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, लाइक 20% पार्ट ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। उस 20% पार्ट को अलग अलग टेक्नोलॉजीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डाइवर्सिफिकेशन आपका होना चाहिए। क्रिप्टो में एक पर्टिकुलर पार्ट लगाएं, एक पर्टिकुलर पार्ट आपका बहुत सेफ साइड रहे, लाइक एफडी। एक पर्टिकुलर पार्ट आपका रियल एस्टेट में हो, एक पर्टिकुलर पार्ट आपका स्टॉक मार्केट में हो। क्रिप्टो मार्केट का जो पार्ट है उसको और फर्दर डाइवर्सिफाई करें, कुछ ब्लॉकचेन में, कुछ मेटावर्स, कुछ वेब3, कुछ डीफाई, कुछ एनएफटी, और फिर वहां भी आप अलग अलग टोकन्स और कॉइन्स में डाइवर्सिफिकेशन करें। तो 3 लेयर का डाइवर्सिफिकेशन हमेशा सजेस्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को। Cool. I guess सबको अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ बायोकॉइन, दिस वाज द फर्स्ट लाइव सेशन ऑफ द क्रिप्टो विंटर्स स्पेशल दैट इज जस्ट फिनिश्ड with Tashish, Jatin, and Rohit very nicely. And I'll thank all our speakers for today, Tashish, Rohit, and Jatin, who is not with us now. Thank you for joining us and taking out the time for today's session. Thanks to you guys. And to all the viewers, just stay tuned to BioCoin for all the series of Crypto Winter Special that is going to come in further dates. Thank you guys. From the site of CoinGupper. You are doing good job. You too. Guys. Bye. Thank you, Tashish. Thank you, Rohit.